So, good evening, and we are back with discussing the basics of accounting. And what are we going to do here? Excuse me. We will spend time today on finalizing the accounting entries. I think I gave you some homework today in the morning, right? उस homework में आपको क्या करना था? You had to record the accounting entries. Now we will I'll discuss how the entries have to be passed. उसके बाद I'll tell you or I'll explain how the entries have to be posted in the ledger. ठीक है? तो वो सारा कुछ अपने को आज कवर करना है. So all eyes on screen. Again, these are concepts that you have already done in your 11th and 12th. So this should serve like a good revision for you. ठीक है? What was the first transaction? Let me open the sheet. Give me a moment. एक minute. बाय द वे यू शुड नेवर मेक द मिस्टेक ऑफ शोइंग योर व्हाट्सएप ऑन स्क्रीन ना मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ इसको देखो दीज आर द 13 transactions. Vidya started her restaurant business by investing a sum of 20. She deposited 12 lakh in HDFC bank account. तो ये सारे transactions का सबसे पहले we have to study how the accounting will be done. Now, Vidya started her restaurant business by investing a sum of 20 lakh rupees. Now, we follow something that is known as the business entity concept. What is the business entity concept? It says that the business entity and the owner for the purpose of accounting will be treated as two separate entities. ठीक है. So owner ने business में पैसा डाला. What is the accounting entry? Think from you have to account from the business का point of view. ठीक है. Think from the business का point of view. Somebody invested money in the business, so cash came in. Cash account is a real account. Debit what comes in. Cash came in. Debit cash by 20 lakh. And Vidya is the owner. She invested 20 lakh rupees in the business. ठीक है. Think from the business का standpoint. Business is separate, the owner is separate. Owner gave 20 lakh rupees to the business. जिस दिन business बंद होगा, whenever the business shuts down, the business will have to repay 20 lakh rupees to the owner. So in a way, not exactly, but in a way, it is an obligation for the business. So we credit Vidya account, but instead of crediting the owner account, we credit owner's capital account. So the accounting entry is cash account debit to Vidya's capital account. ठीक है. Then 12 lakhs were deposited in HDFC bank account. Cash box में 20 lakhs था. It was deposited in HDFC bank. Bank account is a personal account because bank is a person. HDFC bank is an artificial person. ठीक है. You deposited 12 lakh rupees in HDFC bank. Personal account का rule है debit the receiver of benefit, credit the giver of benefit. When you deposited 20 lakh rupees in HDFC bank, what happened? HDFC Bank is received 12 lakh rupees from you, right? It is the receiver of benefit. By HDFC Bank account debit to cash account 12 lakh. ठीक है. Cash went out, credit cash account. She purchased kitchen equipment for 1,50,000 and paid by check. See, kitchen equipment is utensils, pots, gas stove, and all of these things, ovens, microwave, all of that. That is kitchen equipment. It is not your daily kharcha, it is an asset for you. Because it is an asset for you, your accounting entry will be kitchen equipment. So that is an asset. Asset means real account. Asset came in, you purchased that item, asset came in, debit what comes in, kitchen equipment account debited and bank account was credited because payment was made by check. मतलब बैंक से पेमेंट हुआ है. What is bank is a personal account. What is the rule? Debit the receiver of benefit, credit the giver of benefit. बैंक से पैसा गया, bank gave that amount, bank is the giver of benefit, hence bank account was credited. Yesterday we discussed that purchase account should be used only when you are buying the main goods for the business, right? Here your business is the restaurant business. तो जब आप you will buy raw material for making the final product, raw material like fruits, vegetables, dairy, and all of that. All of that basically is purchase. बाकी any other asset that you purchase, you will never debit purchase account. ठीक है. उसके बाद there is an accounting
there is a situation. She purchased vegetables, spices, fruits, etc. for 2 lakh. Out of this, 60,000 was paid immediately and the remaining amount was unpaid, है ना? मतलब 1,40,000 का क्रेडिट परचेस, 60,000 का कैश परचेस. व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री? परचेस अकाउंट डेबिट. परचेस इज एन एक्सपेंस. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट का रूल. क्रेडिट, ठीक है. 60,000 कैश आपने दे दिया, ठीक है. सो 60,000 पेमेंट वॉज डन. क्रेडिट बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट. वाई क्रेडिटर्स आर क्रेडिटेड? सी, क्रेडिटर्स आर द पीपल हु सोल्ड यू द गुड्स ऑन क्रेडिट. आपने उनसे गुड्स ले लिया बट अभी तक यू हैवंट पेड देम. दे आर द गिवर ऑफ बेनिफिट. क्रेडिट द गिवर, विच इज वाई क्रेडिटर्स अकाउंट इज credited. Restaurant sales amounted to 4,60,000. Customers paid cash immediately. अब you sold, people came, you served food, you collected cash from them. ठीक है, आपने सेल किया. सेल इज एन इनकम, नॉमिनल अकाउंट. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सेल अकाउंट इज क्रेडिटेड. एंड व्हेन कस्टमर्स गिव यू द मनी, आपके कैश बॉक्स में पैसा आया. कैश इज अ रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट इज डेबिटेड. ठीक है. देन she did, Vidya did catering for corporate client and charged 150. The client has still not paid at the year end. ठीक है. Now this is a customer. You prepared the food, you sold it to the customer. He received the benefit. Customer is a personal account. Corporate client is a personal account. ठीक है. So personal account का रूल है, डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट. यू सोल्ड द गुड्स टू हिम, he consumed the benefit, so client account is debited and sales is an income. Credit all incomes and gains, income account is credited. ठीक है. Now wages and salaries of staff amounted to 2,80,000. Out of this, 2,50,000 was paid in cash and the balance was paid in the next year. Now salaries and wages क्या है? It is an expense. What expense means? Nominal account. What is the rule for nominal account? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Salary expense है, salary account is debited. ठीक है. 2,50,000 was paid in cash. Cash is a real account. Debit what comes in, credit what goes out. Cash went out, पे किया ना, तो cash account got credited and 30,000 is still payable. Employees worked for you but abhi tak you haven't paid them, so they gave you the benefit. They are the giver of benefit, so you could credit employees account, employee 1, employee 2, employee 3, employee 4, या फिर you can combine all of that together and credit salary payable account. ठीक है. This is how the accounting will be done. Salary account debit to cash account to salary payable account. ठीक है. Eighth entry was annual rent was 96,000. Vidya paid 1 lakh. She paid 4,000 excess rent, right? Prepaid rent. अगले साल का rent अभी दे दिया. 1 lakh cash was paid. Cash paid means cash went out of the business. Credit what goes out. Cash account को credit करो with 1 lakh. What is rent? Rent is an expense. खर्चा. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. What is the annual rent? 96,000. So rent expense debit 96. Cash account credit 1 lakh. और डेबिट किसको होगा? प्रीपेड रेंट अकाउंट. रेंट पेड इन एडवांस, आपने आज पे कर दिया. इन द फ्यूचर यू विल रिसीव बेनिफिट, राइट? सो इट इज लाइक एन असेट फॉर यू, है ना? So you paid in advance to the other person. In the future, you will get the benefit of using that particular premises. So the accounting entry is rent expense account debit 96,000, prepaid rent account debit 4,000, cash account credit 1 lakh. ठीक है. Now, next transaction is new delivery van was purchased on credit from Maruti Suzuki. Van purchase किया on credit, मतलब you have not paid for it immediately. ठीक है. So Maruti Suzuki is a vendor, है ना? Maruti Suzuki is a vendor. What will you do here? You will debit delivery van. It is an asset which came in. Delivery van account debit 1 lakh to Maruti Suzuki account credit 1 lakh. Supplier है, amount has not been paid. Supplier is the giver of benefit, उसको credit करो. From the total purchases made in cash, she returned vegetables worth 5,000 as they were spoiled. कितने का परचेस किया था? परचेस वॉज फॉर 2 lakhs. 5,000 का परचेस वापस कर दिया. परचेस वॉज एन एक्सपेंस. Purchase return is a reduction of that expense. It is like a gain for you. Gain, nominal account, credit all incomes and gains.
सो आपने परचेस रिटर्न को क्रेडिट किया एंड व्हेन यू रिटर्न गुड्स टू द सप्लायर ही गेव बैक योर 5,000, कैश केम इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट इज डेबिटेड विथ 5,000. ठीक है. देन शी गेव अ डिस्काउंट ऑफ 1,500 टू द कॉर्पोरेट क्लाइंट एंड कलेक्टेड द बैलेंस. When you give a discount, that disc so I sold goods to someone for 150 and discount means I'm going to collect a lesser amount. It is a loss for me. So discount allowed account debit 1,500, loss है debit all expenses and losses. एक्सक्यूज मी, हाउ मच डिड द कस्टमर पे? कस्टमर को देना था 150, उसने दिया 148,500. कैश केम इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, 148,500 से कैश अकाउंट को डेबिट, कॉर्पोरेट क्लाइंट का अकाउंट सेटल हो गया, क्रेडिट कॉर्पोरेट क्लाइंट अकाउंट विथ 1,50,000. ठीक है. नाउ शी टुक अ लोन ऑफ 80,000 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ऑन दिस लोन शी पेड इंटरेस्ट ऑफ 8,000. अब स्टेट बैंक ने मुझे लोन दिया बट मेरा अकाउंट कौन से बैंक में है? माई अकाउंट इज इन HDFC बैंक. सो द लोन दैट स्टेट बैंक गेव मी, इट द मनी गॉट डिपॉजिटेड इन माई HDFC बैंक अकाउंट. व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री? HDFC bank account debit to SBI loan. SBI loan is a liability. Bank gave me the loan. Bank is a person. Bank is the giver of benefit. So credit the giver, which is why SBI loan account is credited. ठीक है. I could have debited cash also, but यार कोई बैंक आपको कैश में लोन नहीं देता है. That money gets deposited in your bank account. ठीक है. And in the last step, so what I had to pay interest of 8,000. Interest is an expense. Interest expense account debit, debit all expenses and losses. HDFC बैंक में से पैसा पे किया, bank is the giver of benefit, credit HDFC bank account. And last transaction is she invested 50,000 in a fixed deposit with bank, and on this FD she earned interest of 4,500. करंट अकाउंट में से पैसा निकाला, फिक्स्ड डिपॉजिट में डाला. फिक्स्ड डिपॉजिट इज एन असेट फॉर मी. न्यू असेट इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, HDFC फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट. और बैंक अकाउंट में से मनी वॉज पेड, बैंक पेड मनी फ्रॉम द current account into the fixed deposit account. So HDFC bank account is credited. And the question says that she earned interest of 4,500. When you earn interest of, अभी तक मिला नहीं है, but you have earned that interest. Entry क्या होगा? Interest receivable account debit to interest income. Why interest receivable? Because money is still not received. And interest income, interest is an income for me. Credit all incomes and gains, which is why interest income is credited. ठीक है. अब एक बार ऊपर से देखो एंड टेल मी इफ देर इज एनी ट्रांजैक्शन दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड. एक एक करके पढ़ो, चेक वेदर व्हाट यू डिड वाज द सेम, एंड देन इफ यू हैव एनी डाउट्स कि इसको डेबिट क्यों किया, उसको क्रेडिट क्यों किया, आई विल आंसर दैट पार्ट. ठीक है. देख लो एक बार. टेल मी व्हेन यू वांट मी टू स्क्रॉल. श्योर. लुक एट 4, 5, 6, 7.
Okay. Sure. Look at 8, 9, 10, 11. Plus 11. देख लो 12 एंड 13. ठीक है. नाउ, Now, after the transactions are recorded in the books of primary entry, these transactions should be summarized in one place so that if anybody asks you कि यार ज्योति account का balance कितना है या तानिया account का balance कितना है, you should have all of that information in one place. And you can achieve that by posting the transactions relating to one account in one place, which is the activity of ledger posting. ठीक है. What is a ledger? A ledger is a place where we summarize all transactions. There is a debit side, there is a credit side. Left side is debit, right side is credit. अब पोस्टिंग कैसे करना है? ठीक है. Look at this transaction. What is the entry? Buy cash account debit to Vidya's capital account. Cash account को debit किया है. So cash account debit. And which account got credited? Vidya's capital account got credited. कितना पैसा जमा हुआ? 20 lakhs. एंड इन दिस एंट्री, सी एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट. विद्यास कैपिटल अकाउंट गॉट क्रेडिटेड, तो ओपन विद्यास कैपिटल अकाउंट, उसके क्रेडिट साइड में लिख दो बाय कैश. ठीक है. कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय कैश. ठीक है. फर्स्ट ट्रांजैक्शन यू पोस्टेड, कैश अकाउंट को डेबिट किया, विद्या अकाउंट कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. Second transaction, she deposited 12 lakh in HDFC bank account. Cash account में 20 lakh था. Out of that 12 lakh was deposited in HDFC bank account. What is the accounting entry? HDFC bank account debit. ठीक है. HDFC बैंक का लेजर डेबिट किसको किया? टू HDFC बैंक अकाउंट डेबिट. कितना? 12 लाख. विच अकाउंट गॉट क्रेडिटेड इन द प्रोसेस? कैश अकाउंट. तो अब कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय HDFC बैंक अकाउंट 12 लाख. ठीक है. एक अकाउंट क्रेडिट हुआ एंड एक अकाउंट डेबिट हुआ. HDFC बैंक अकाउंट गॉट डेबिटेड. वी सेड ना, वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट. ठीक है. सो एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट गेट्स क्रेडिटेड इन द प्रोसेस. आर यू विथ मी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay. Now, she purchased kitchen equipment for 1,50,000 and paid by check. एंट्री था किचन इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अब देखो, ओपन करो किचन इक्विपमेंट अकाउंट, उसको डेबिट करो, क्रेडिट टू HDFC बैंक, राइट 1,50,000. एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट करो किचन इक्विपमेंट 150. यहाँ पे टू, यहाँ पे बाय. Kitchen equipment got debited with 150. Bank account got credited by 150. ठीक है. So for every debit, there is an equal and corresponding credit. Are you with me, all of you? Yes, sir. Okay. Now, अगला वाला देखो.
परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक टू क्रेडिटर्स। एक परचेस अकाउंट ओपन करो, उसके डेबिट में लिखो टू एच डी एफ सी बैंक 60, टू क्रेडिटर्स 140। अब एच डी एफ सी बैंक में जाओ, क्रेडिट परचेस अकाउंट वॉज डेबिटेड, एच डी एफ सी बैंक अकाउंट वॉज क्रेडिटेड, तो एच डी एफ सी बैंक के क्रेडिट साइड में लिखो 60,000। ठीक है, इसके डेबिट साइड में लिखो 60, इसके क्रेडिट साइड में लिखो 60। फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। व्हाट वाज द सेकंड अकाउंट? क्रेडिटर्स परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 140। क्रेडिटर्स में आओ, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट राइट डाउन 140। ठीक है, आर यू विथ मी? Yes, sir. ओके, नाउ restaurant sales amounted to 460, customers paid cash immediately, cash account debit to sales। अब इधर आओ कैश अकाउंट में, डेबिट साइड में लिखो टू सेल्स। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड विथ 460 एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड विथ 460। कैश को डेबिट, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। देन कॉर्पोरेट क्लाइंट का एंट्री है, कॉर्पोरेट क्लाइंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कॉर्पोरेट क्लाइंट अकाउंट को डेबिट किया 150, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया 150। सो कॉर्पोरेट क्लाइंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट वन, सैलरीज अकाउंट डेबिट। सैलरी अकाउंट खोलो, उसमें डेबिट साइड में लिखो टू कैश 250, टू सैलरी पेएबल 30,000। ठीक है, अब कैश में आओ, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय सैलरीज 250 एंड यहां पे क्रिएट अ सैलरी पेएबल अकाउंट, उसके क्रेडिट साइड में लिखो 30,000। आर यू फॉलोइंग मी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Anyone who has any difficulty in understanding whatever I am discussing? No, sir. पक्का? Okay. So similarly, we'll post the individual ledger. We'll post entries to individual ledgers, individual accounts. आपने सारे ट्रांजैक्शंस पोस्ट कर दिए। नाउ यू आर एट द एंड ऑफ द ईयर। अब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है। ठीक है, व्हाट विल दैट इन्वॉल्व? क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप एक एक लेजर पकड़ेंगे। ठीक है, ये लेजर देखो, कैश अकाउंट, टोटल इज, आप when you are at the end of the year, take real and personal accounts on one side, take nominal accounts on the other side. पहले let's look at all the real and personal accounts. Cash account is a real account, दोनों साइड का टोटल लो, टेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड which comes to 26,13,500, take the total of credit side, the total comes to 15,50,000। total of debit side is more than total of credit side। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड का टोटल। अब आपको अकाउंट को क्लोज करना है, यू हैव टू क्लोज एंड बैलेंस द अकाउंट, टेक द टोटल ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, जो साइड में टोटल कम है, राइट नाउ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज लेस। जो साइड का टोटल कम है, राइट डाउन योर बैलेंसिंग फिगर देयर। ठीक है, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द ईयर? During the year, I had total cash receipts of 26 lakh 13,500. I made payments of 15 lakh 50,000. उसके बाद how much money was left with me? 10 lakh 63,500 was left with me. Now, cash, understand, all real and personal accounts, what happens to them? You reach the end of the year, 10,63,500 cash is left with you। अब ईयर खत्म हो गया तो आप कैश फेंक नहीं देंगे ना, यू विल कैरी इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अगले साल यू आर गोइंग टू यूज दैट कैश इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सो यू क्लोज द अकाउंट, यू राइट डाउन बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, यू टेक इट टू द नेक्स्ट ईयर। फिर नेक्स्ट ईयर में अगेन राइट ऑन द डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पे कैरीड फॉरवर्ड, यहाँ पे ब्रॉट फॉरवर्ड। नाउ रिमेंबर वन थिंग, if the total of debit side is more, it is a debit balance, if the total of credit side is more, it is a credit balance। ठीक है, but हाउ टू क्लोज लेजर्स, रियल एंड पर्सनल अकाउंट, दोनों साइड का टोटल लो, चेक विच साइड टोटल इज हायर। इफ टोटल ऑफ डेबिट साइड इज हायर, दैट मीन्स इट इज अ क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। क्लोजिंग मतलब ईयर एंड। ठीक है, टू बैलेंस द लेजर, द क्लोजिंग डेबिट बैलेंस इज रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, इसका टोटल था 26,13,500, इसका टोटल था 15,50,000।
To balance the ledger, you wrote the balance on the credit side, but this is closing debit balance. अब closing debit balance of year one became opening debit balance of year two. Opening debit balance is written on the, ये closing यहाँ का became opening for the next year. It is written on the debit side. So if you want to remember, तो कैसे याद रखेंगे? क्लोजिंग डेबिट बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड, ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑन डेबिट साइड, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस ऑन डेबिट साइड, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड. इन शॉर्ट, ओपनिंग बैलेंस सेम साइड पे आता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड में जाता है. And this system has to be applied only for real and personal accounts because those balances are carried forward to the next year. When I speak of all the income and expense accounts, वहां पे क्या होता है? See, income and expense accounts, you will have to find out what was the financial performance of the business. So what you do is you apply the same procedure. ठीक है? In case of nominal accounts, in that is all income and expense accounts, आप दोनों साइड का टोटल लो, identify total of which side is more, but don't carry it forward to the next year. Transfer the balance to the profit and loss account. What do I mean by that? ये देखो, परचेस अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है. टोटल ऑफ डेबिट साइड 2 लाख, क्रेडिट साइड में 0 है. तो ये 2 लाख आप क्या करो? डोंट कैरी इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? इट इज अ कंबाइंड नॉमिनल अकाउंट. ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर रिटन देयर. तो परचेस अकाउंट को व्हेन यू हैव टू क्लोज एन एक्सपेंस अकाउंट, डोंट कैरी इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, ट्रांसफर द बैलेंस टू पी एंड एल. सो एंट्री क्या होगा? परचेस अकाउंट हैड अ टोटल ऑफ 2 लाख ऑन द डेबिट साइड. You wanted to close the account. What did you do? You credited purchase account with 2 lakh rupees. And where did you transfer it? You transferred it to P&L account. ठीक है? This entry is known as the transfer entry. ठीक है? एक बार इतना सा पार्ट देखो तो, from here up till here, एक बार read it. ठीक है? अब सेल्स अकाउंट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट. ठीक है? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में यू हैड 460, 150, टोटल वॉज 6,10,000. नॉमिनल अकाउंट इज नॉट कैरीड फॉरवर्ड. उसका जो बैलेंसिंग फिगर है, दैट गेट्स ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में यू हैड 6,10,000. अकाउंट को क्लोज करना है, सो डेबिट सेल्स अकाउंट विद 6,10,000. सो सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,10,000. So all the ledgers of nominal accounts are closed in this manner, where the balancing figure is not carried forward, it is transferred to P&L account by way of a transfer entry. ठीक है? अब ये अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया. सैलरीज अकाउंट भी ट्रांसफर किया, सब कुछ ट्रांसफर किया टू योर कंबाइंड नॉमिनल अकाउंट विच इज योर P&L account. P&L account ideally is a combined nominal account. ठीक है? We have seen how to post entries to the ledger, and we have also seen uh, कि how to close. Real personal accounts are closed by carrying calculating the balancing figure and carrying it forward to the next year. Now, tomorrow what we'll do is we'll understand what is a trial balance, and from that trial balance we'll understand how exactly are we supposed to prepare the financial statements.
ठीक है। मतलब कल हम देखेंगे कि बैलेंस शीट पी एंड एल हाउ इज दैट प्रिपेयर्ड। तो टुमारो द एंटायर फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो जर्नी है राइट अप टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट विल बी डन। एंड देन फिर नेक्स्ट वीक में लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन पिक अप। ओके, आर यू ऑल विथ मी? Yes, sir. Yes. परफेक्ट। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। बाय। Thank you, sir.